हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुवैत। ये कुवैत से मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड आप सबको ईद मुबारक। जब तक आप ये वीडियो देखोगे ईद का नेक्स्ट दिन रहेगा, बट आई एम विशिंग यू ऑल अ ब्लेस्ड एंड हैप्पी ईद। सो सबको ईद मुबारक। And today we'll be cooking something special also, since it's Eid and we are in the Gulf, so we'll be cooking something special for today as well. And अभी देखते हैं कि what we are gonna do in today's day, because we are having like 4 days holiday over here and my husband is having 10 days holiday. And quite jealous that he's having 10 days, but 4 days are also enough. So yeah, now let's go and see what we are going to prepare for today for the breakfast. So I'll show you. Outside currently it's 40 degrees and वो भी like it's morning like 10:20 right now, and outside it's almost 40 degrees. You see the dust in the balcony. Like no matter how much you clean, it's gonna be the same. So for breakfast today, we are gonna make French toast. So over here, there's milk, 2 eggs, and I'm gonna use the multigrain bread for the French toast and brown sugar. Multigrain bread में बहुत ही अच्छा French toast बनता है, and a little bit of ginger for the tea because we like it that way. So for lunch, biryani preparation chal rahi hai यहाँ पे, and my husband had already marinated the chicken yesterday, and he was the chef for today, so he's gonna prepare the biryani for us for today. So the process has begun, and यहाँ पे rice soak करने के लिए रख दिया था, दूध boil होने के लिए रख दिया था for kheer. So we are gonna chop some dry fruits now for kheer. सो यहाँ पे जो बिरयानी का ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट कुक हो गया है, और राइस भी बॉयल ऑलमोस्ट हो गया है। 80% राइस बॉयल ही करना था। दूध अभी भी बॉयल हो रहा है, तो साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत ऐसे घी में उसको थोड़ा रोस्ट करके डालूँगी। यहाँ पे खीर बन चुकी थी ऑलरेडी, बिरयानी भी बन चुकी थी, एंड जो बिरयानी की रेसिपी है मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर की है, सो आई विल लीव द लिंक फॉर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो वो रेसिपी डिटेल में है, आप वो वीडियो में चेक कर सकते हो। एंड इट वाज रियली वेरी वेरी यम्मी। बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। Hi guys, so we are back again and we are all ready and we are all set to head out. And where we are going? The Avenues Mall. So now let's go to the Avenues Mall. So we have reached the avenues, और हम लोग पहले IKEA जाना चाहते थे, so we came from the other side, and here we can see the board for IKEA, and let's go in.
So now, after reaching inside, we were discussing whether we eat first or what. So we prefer to eat first because पेट पूजा भी ज़रूरी है. So we went ahead and we had some snacks first, and then we went ahead for the shopping. अभी मैं आपको IKEA का थोड़ा बहुत क्लिप्स यहाँ पे दिखाऊँगी। आप यहाँ पे आपके घर के लिए जो भी सामान चाहिए आपको यहाँ पे सब मिलेगा। कर्टन से लेके बेडशीट्स, फिर किचन के लिए इक्विपमेंट्स, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत आपको आइडियाज़ भी दिए जाते हैं कि लाइक आप आपका घर का सेटअप कैसे कर सकते हो, आपको फर्नीचर आइटम्स भी वहाँ पे मिलेंगे। ये थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से वो उन लोग आइडियाज़ देते हैं कि आप इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें परचेज़ करते हो तो आप डेकोरेट कर सकते हो आपका घर, या रेनोवेट करने के टाइम आप इस तरीके से कर सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस देन यू कैन buy these things and like make it feel like that the same way. उसके बाद फिर यहाँ पे मिनीसो दिख गया था, सो वी वेंट अहेड एंड वेंट इनसाइड मिनीसो टू चेक if there is anything which would be of our interest. आप देखिए आगे वीडियो में कि कुवैत के मिनीसो में क्या-क्या चीज़ें मिलती है। और यहाँ पे अभी मैं आपके साथ थोड़े बहुत क्लिप्स एवेन्यूज़ मॉल की शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ इट वाज़ अ लॉट क्राउडेड सिंस इट वाज़ द डे ऑफ ईद, सो सब लोग घूमने निकले थे एंड द मॉल वाज़ वेरी, वेरी क्राउडेड। सो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने निकाले हैं। आई विल गिव यू अ ग्लिम्प्स अबाउट हाउ द एवेन्यूज़ मॉल लुक्स फ्रॉम इनसाइड।
Hi guys, so we are back home and we came quite late, so it's almost now 11:45 p.m. So I will show you all what did we get from Avenues IKEA. अपने vlog में देखा ही रहेगा. We visited IKEA as well. So we got a few stuff from there as well. So I will show you all and उसी के साथ मैं vlog का ending करूँगी. So I hope you all have enjoyed watching this vlog. And if you all did, then please do hit the like button. And also, you all can comment down what part of the vlog did you all love the most, whether the biryani part or the avenues mall में गए थे वो वाला part या the ending one, whichever you all liked. You all can comment down below and let me know. And I will see you in my next video. If you're new to my channel, do consider subscribing to my channel. And take care, guys. Bye bye. So as you all can see, there's quite a lot of stuff. So fast मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लाया है. So starting with Miniso. So Miniso से I got like this slippers, okay, and उसके बाद एक टिफिन बैग लेके आई हूँ which looks like that. So that's it from Miniso. And यहाँ पे Miniso से है this the regular one makeup निकालने वाले cotton pads जिसकी 2 पैकेट्स लेके आई हूँ. So that's there. फिर coming on to Bath and Body, so I got some shower gels right here. In the stars है. फिर we have Sleep. This one is my favorite and I love it. Then we have Into the Night, and we have Energy, and we have, which one is this? Pink Chiffon, and this is the most loved one. So this is Darkest. It's very nice. And uske baad we have just got 2 body lotions. One is Hello Beautiful. So this is one, and this one is my favorite wala variant में से, which is Sleep. So this is the body lotion for that. So then Al Nasser में से I have got a pair of shoes for me, which I will not open it right now. So I'm not gonna show that one, but it's just one pair of shoes. And फिर IKEA में से we have got some beautiful candles which look like Christmas season वाला candle. So it looks like that. फिर उसके बाद this is the refill pack for जो कपड़े के like you know on your clothes if there are like small like thread particles or something, so to remove that out. Then this is a bath loaf, so this one. And since it's too hot over here, so you require an umbrella. तो umbrella एक छोटा सा umbrella bag में हमेशा carry करने के लिए. Then we have a cutting ply over here, cutting board. उसके बाद एक normal सा tray I have got. And उसके बाद this is to keep the spoons and knives and वो सब चीज़ें रखने के लिए. So got 2 of these. And this is to keep rice. So we don't eat much of rice, but थोड़ा बहुत इसमें रखने के लिए 1 container. And then एक doormat है. So this is for the bathroom. We have got it. So yeah, that's all, and I hope you all have enjoyed watching this. So I will see you in my next vlog. Bye bye.